Good morning, dear students. I hope you all are fine. Today we will do the first law of exponent. Now see class, if you have to multiply 2 raised to the power 2 and 2 raised to the power 3, then class how you will write? You will write like this: 2 into 2, 2 times 2 and 2 into 2 into 2 means 3 times 2. Now in the power notation what you will write? 1, 2, 3, 4, 5. 2 raised to the power 5. Now let us take one more example. 3 raised to the power 4 and 3 raised to the power 5. Now how will you will write? You will write 3 4 times. We will multiply 3 4 times. This is 4 times. And next we will multiply 3 5 times. This is the expanded form. This is 5 times. Now, if we have to write in exponent notation form, then what you will write? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, you will write 3 raised to the power 9. So, this is the value for this in the exponent notation form. Now, see class. You can see here, these powers will be added here. 2 plus 3 becomes 5. And here also you can see the power is 3 raised to the power 4 plus 5 equals to 9. So instead of writing in the expanded form, now we will directly write the formula when the base is same and the powers are different. Means when the base is same and the exponent number is different, we will directly write the answer as by adding the powers. हम क्या करेंगे? उनकी powers को plus करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, हम उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं करेंगे. तो व्हाट विल बी द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स? दिस विल बी x, हम x की फॉर्म में लिख रहे हैं, रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू द पावर m. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x रेज टू द पावर n प्लस m. मीन्स द पावर्स विल बी एडेड. राइट क्लास? Now what we will do class? We will start the exercise. Your question first is, simplify the following in exponential form. So class, we have to write the answer in exponential form only. If it is written only simplify and find the value, we will find the value also. But here we will write only in the exponential form. So the first question is 3 raised to the power 3 into 3 raised to the power 5. Now the base is same, the base of both the numbers is 3 and the powers are different. So we will add the powers and this will be 3 raised to the power 8. I hope class you understood this. Now see class, if there here we are not writing the formula again and again. We are just writing it once in the top and it will be okay. But in the exam, when there is a single question, you have to write the formula, which formula you have used. So keep in mind, at every step you have to write the formula. Now the second question is 8 raised to the power 4 into 8 raised to the power 6. So this will be 4 plus 6 equals to 8 raised to the power 10. सारे क्वेश्चंस क्लास इसी पर बेस हैं, तो ये बहुत ही इजी हो गई एक्सरसाइज आपकी. आप नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए. दिस इज इन द रेशनल नंबर फॉर्म ऑल्सो. 3/4 इंटू 3/4 रेज टू दी पावर 4. देखिए क्लास, जो बेस है आपका यहाँ पर वो क्या होगा? 3/4. तो 3/4 सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं. तो 3/4 ब्रैकेट का यूज करना क्लास नहीं भूलेंगे, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा. सो दिस विल बी 3/4 रेज टू दी पावर 7. दिस इज द आंसर. अगेन क्लास, इफ यू राइट इट लाइक दिस, it is treated as wrong. You will get 0 in this. Okay. Now one negative number question. The D is minus 10 raised to the power 5 into minus 10 raised to the power 3. Now the base is minus 10 here. Add the powers. 5 plus 3.
So this will be minus 10 raised to the power 8. This is your answer. The equation is minus 4 by 5 raised to the power 5 into minus 4 by 5 raised to the power 6 equals to minus 4 by 5, माइनस साइन भी ब्रैकेट में क्लोज होगा क्लास, ये ध्यान रखिएगा, 5 प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 5 रेज टू दी पावर 11. आई होप क्लास आप ये अच्छे से समझ गए होंगे. लास्ट क्वेश्चन है इसका आपका, दिस इज माइनस 7 बाई 9 रेज टू दी पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 7 बाई 9 raised to the power 16. So this will be minus 7 by 9 raised to the power 8 plus 16 equals to minus 7 by 9 raised to the power 8 plus 4 is 24. देखिए क्लास, अगेन ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में दे रखा है आपको सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो यहाँ पर हमारे ये आंसर्स हो गए डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू भी निकालेंगे. थैंक यू क्लास, कीप प्रैक्टिसिंग, कंप्लीट द वर्क अप टू एक्सरसाइज 5.3. थैंक यू.